अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार पास्ट पेपर्स के अंदर आते हैं। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप जो बायोलॉजी का पेपर है वो बिल्कुल आराम से कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम देखते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 है, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 10 है, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 12 है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 13 है, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जितने भी चैप्टर्स के मैंने नाम लिए हैं ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के देखें तो इनमें से जो पेपर आता है इन चैप्टर्स में से वो 46 नंबर का पेपर आता है। यूनिट नंबर 3, 7, 10, 12, 13, ये 5 यूनिट अगर आप कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इनके कर लेते हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं वो 46 आएंगे। इसमें एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन भी शामिल कर लें तो 46 मार्क्स बन जाते हैं। पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला यूनिट और पहला इसका क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मेराइन बायोलॉजी। Question number 3 है what is biological control, give its examples. Question number 4 differentiate between deductive reasoning and inductive reasoning. Question number 5 differentiate between chemotherapy, radiotherapy and gene therapy. Question number 6 define biome with an example. Question number 7 how does theory differ from the law. नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। ये हमने इस तरह मैनेज किए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, जिन चैप्टर से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनके ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं, जिन चैप्टर से बिल्कुल कम शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनके कम। चैप्टर नंबर 2 है, इससे सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो 4-5 ही हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइडिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3 गिव 2 rules of praxis, differentiate between saturated and unsaturated fatty acid. Question number 4 है what is heat capacity of water, give its importance. Question number 5 define biochemistry, give its importance. Next chapter number 3 है, इसकी तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन what do you mean by induced fit model of enzyme action. Question number 2 what is lock and key model, who proposed this model. Question number 3 differentiate between a piano enzyme and halo enzyme. Question number 4 what are enzyme inhibitors, give 2 examples. Question number 5 differentiate between reversible and irreversible enzyme inhibitors. Question number 6 differentiate between competitive and non-competitive enzyme inhibitor. Question number 7 what are cofactor and activator of enzyme. Question number 8 write 4 characteristics of enzyme. Question number 9 what is difference between pepsin and pepsinogen. Question number 10 differentiate between binding site and catalytic site. Question number 11 give rule and example of enzyme activator. नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 2 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गिव इट्स कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंस बिटवीन फिगोसाइटोसिस एंड फिनोसाइटोसिस। Question number 4 define polysomic and ribosomes. Question number 5 write down silent features of cell theory. Question number 6 what is location of centriole in the cell, what is their role. Question number 7 differentiate between chromoblast and leucoblast. Question number 8 give 3 function of smooth endoplasmic reticulum. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन लैटिक फेज एंड लिसोजेनिक फेज। Question number 2 what is bionomial nomenclature, what are the 2 rules of nomenclature. Question number 3 write down the symptoms and prevention of hepatitis. Question number 4 how virion differ from virons. Question number 5 what are capsomeres, how many capsomeres are present in the capsid of herpes virus. नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 2 राइट 4 postulate of gram theory. Question number 3 what are mesosomes and some of their possible function. Question number 4 what are pill, give their functions. Question number 5 give the structure and function of heterocytes. नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट नंबर 7 की तरफ। पहला क्वेश्चन है हाउ एल्जिया डिफर फ्रॉम प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस. क्वेश्चन नंबर 3 what is corolla, give its significance. Question number 4 differentiate between zoo flagellates and dinflagellates. Question number 5
write symptoms of malaria and their cause. Question number 6, write down the similarities and differences between fungi and fungus like protista. Question number 7, how ciliates differ from the other protozoans. Question number 8, give the structure and function of diatoms. Also write their characteristics of diatoms. Question number 9, what are the canoflagellates? Question number 10, write the feature of Caryophyta. Question number 11, what is sleeping sickness? Question number 12, green algae are considered anacrustal organism of green land plants. Why? नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट नंबर 8 की तरफ। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर लाइकन्स, गिव देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोगैमे एंड प्लाज्मोगैमे। क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंशिएट बिटवीन रट्स एंड स्मट्स। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन हाइफिया, गिव देयर two types. Question number 5, what are microhazia? Question number 6, differentiate between septate and cyanotic hyphia. Question number 7, what is endomyphresia? नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई बैरोफाइट्स प्लांट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ स्पोर्स ऑफ मोसिस differ from spores of liverworts. Question number 3, what is alternation of generation, give its significance. Question number 4, differentiate between monocot stem and dicot stem. Question number 5, differentiate between microphylla and megaphylla. Question number 6, what are essential and non-essential parts of flower. Question number 7, how does gymnosperms differ from angiosperms, give 2 points only. नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पुलपप्स एंड मेडोसिया। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉलमेट्स एंड क्लोमेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लोब्लास्टिया एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फेस्टेशन एंड डिसइन्फेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स एंड यूज ऑफ 2 यूजफुल insect. Question number 6, differentiate between budding and gamulus. Question number 7, differentiate between radial and bilateral symmetry. Question number 8, differentiate between proterostomia and deuterostomia. Question number 9, define the term spiral cleavage. Question number 10, differentiate between रेडियल क्लीवेज एंड स्पाइरल क्लीवेज। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोएनर्जेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एक्शन स्पेक्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. Question number 4, how did the evolution of photosynthesis affect the metabolic pathway. Question number 5, differentiate between photosynthesis and respiration. Question number 6, what is a Z scheme, why is it is called so. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन डिफाइन न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ सिलेक्शन ऑफ अ फूड टेक्स प्लेस बाय ओरल कैविटी। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्लेटन एंड ग्रेस्टन। क्वेश्चन नंबर 4, राइट कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ salivary glands in man. Question number 6, what is prevents the wall of stomach from being digested. Question number 7, how secretion is produced in man. Question number 8, what is its effect on pancreas in man. Question number 9, what is the role of liver in the digestion of food. Question number 10, difference between appendix and appendix. नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट नंबर 13 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, what is the mechanism of inhalation of air in man. Question number 3, differentiate between bronchi and bronchioles. Question number 4, what are the symptoms of asthma. Question number 5, differentiate between organic and cellular respiration. Question number 6, how is better respiratory medium than what. Question number 7, what is photorespiration, name organelles involved in it. Question number 8, what is emphysema, write its symptoms. Question number 9, what is diving reflex. Question number 10, what change occur in animal in drug diving reflex. नेक्स्ट यूनिट नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर पोटेंशियल एंड सल्यूट पोटेंशियल. क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस. क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन एप्लोप्लास्ट एंड सेमोब्लास्ट pathway. Question number 4, differentiate between single and double circuit heart. Question number 5, differentiate between diffusion and osmosis. Question number 6, differentiate between thrombus and embolus. क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन रोटेशन, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट. ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बायोलॉजी के, अगर आप ये 14 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाले 3 सेक्शन है वो बिल्कुल आराम से हो जाएंगे. बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह.